वीडियो। ओके, तो सिर्फ हम अभी कॉन्फ़िगरेशन हमने खत्म किया है। सिर्फ आपको एक बार बीपी बना के दिखाता हूँ कैसे बनाते। क्रिएट अ बीपी एंड यूजर्स रोल, राइट। तो उसके लिए आपको बीपी, राइट, बीपी यूजर ट्रांजेक्शन बीपी, एंटर। उसके बाद इसको क्लोज कर दो, क्लिक ऑन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ये 00000 ये जो रोल है वो जनरल डेटा के लिए है, ध्यान में रखिए। आपका ग्रुपिंग BP12 है, बिजनेस पार्टनर का ग्रुपिंग। उसके बाद टाइटल जो है कंपनी कोड 0003, राइट। राइट, यहाँ पे वेंडर का नाम डाल सकते हो आप, राइट। तो मैं अभी यहाँ पे स्काई वेंडर पे नाम दूंगा, राइट। आफ्टर दिस यू हैव टू add the language, right? Language is EN, right? Enter the language. After this, enter here the street name, select the language first, English. After country is there, right? Then here postal code 411046, right. After this, add here city, right. After this, check it is error free or not, right. It is error free, so you can save this, right. वो क्रिएट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, डिस्प्ले चेंज मोड में जाना है। तो डायरेक्टली आप यहाँ से आपको रोल सेलेक्ट करना पड़ेगा, FLV N00। दैट रोल इज अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रोल है, उसको सेलेक्ट करो और कंपनी कोड पे क्लिक कीजिए। कंपनी कोड पे क्लिक करने के बाद स्विच कंपनी कोड में जाइए, राइट। यहाँ पे आपका कंपनी कोड डालिए PS01, राइट। दिस इज योर कंपनी कोड, राइट। आफ्टर दिस ये रिकंसिलेशन अकाउंट, ये भी आपको क्रिएट करना पड़ेगा, रिकंसिलेशन अकाउंट, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे आप डाल सकते हो शॉर्ट की 001, राइट। ठीक है, तो चेक कीजिए इज देयर एनी एरर, नो, सो देयर इज नो एरर। क्लिक ऑन सेव। After saving this, again switch into change, right. Select the role which is a supplier role, that is again FLV N01, right. So this is your role. Click on purchasing, enter the purchasing organization here. This is your purchasing organization, right. Enter, write the order currency, that is INR. Payment terms 0001, right. उसके बाद इनको टर्म्स, ये भी मैंने आपको बताए थे, इसमें से 2000 सेलेक्ट कीजिए। इनको टर्म CFR, राइट। रेट चार्जेस, लोकेशन डालिए पुणे, राइट। आफ्टर दिस हियर सेलेक्ट दी GR based verification. Click on partner functions, right. Add partner functions, OA, right. DP VN FS, right. FS is there, right. OA DP FS FVN PI. So add that partner functions and just hit enter. So already this will comes, right. So this is your vendor's number. Copy that number, vendor's number, right, and click hit the save. Changes has been saved, right. This completes your BP here. Okay. Thank you.